उस रैंक में देखना चाहिए। रैंक में मतलब we want to see all of us should be in that rank, and आप और हम वो एग्जाम्पल क्रिएट हो जो एग्जाम्पल के तहत आप और हम दूसरा किसी को भी, उन लोगों के टीम मेंबर्स को भी मोटिवेट कर पाए, उन लोगों को दिशा दिखा पाए। तो हम लोग जब शुरू किए थे इस जर्नी में, crowd1 का जर्नी, हम लोगों के साथ बहुत कुछ नहीं था दोस्तों। बार बार हम लोगों ने आप लोगों के सामने बताए और हम लोग वो काम करते गए और कंपनी भी ग्रो करता गया। और हम लोग जो 3 महीना में पहुंच सकता है, 2 महीना में पहुंच सकते हैं, शायद हम लोगों ने 4 महीना 5 महीना में। लेकिन आज हम लोगों के पास वो नॉलेज है, हम लोगों ने वो कर चुके हैं पूरा टीम के अंदर। और आज हम लोग आप लोगों के साथ इस DIQ प्रोग्राम लेके आए। जो DIQ प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। Recording in progress. और इस DIQ प्रोग्राम में वो विल शो यू, हम लोग एक्स टीम और टीम वर्ल्ड स्टार की तरफ से हम लोग आप लोगों के साथ काम करेंगे। आप लोगों के साथ हम लोग कुछ बताएंगे कैसे करना है, और हर हफ्ता हम लोग वो सारे काम करेंगे। हर वीकली बेसिस में, डेली बेसिस में हम लोग इकट्ठा वो काम करेंगे जिससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए आज का जो स्पीकर है, जो हम लोगों के सामने बताने वाले हैं DIQ का कुछ आज का टॉपिक, मैं आई जस्ट वांटेड टू वेलकम Lota, and she is here already with us, and we are going to start tonight's call. So please welcome Lota, and we are looking forward to learn from you tonight. Of course, if don't think guys, you are the people only doing this. We also do the same thing for our next rank. So DIQ is not only the director in qualification. If I am a president, I am looking forward to be ambassador. So I am working for president 2-star to senior president right now. So I'm working as well DIQ. Maybe DIQ में काम कर रहा हूँ, तो लोटा भी काम कर रहे हैं। We all are working together. So please welcome Lota, and stage is yours. So namaste. Thank you so much, and namaste to everyone. And first of all, I want to just say that it's fantastic how many of you that have answered the survey. Anshuman and I have have worked since last call with summarizing all the surveys, and it's fantastic to read your answers too. It has really been a great pleasure to do this. So today's call, we will just go through a few points, so we can start with the full training on Sunday with the program, because that DIQ is 90 days. These 90 days don't need to start the first in 1 month. It's your 90 days from the day that you start. So we will have a little bit more about the key points today, and also we have some of you that have filled in the survey and answered the question, but we didn't get your username. And we will also post these names, the full list, so that you can send us an email. So you also can be part of the start at Sunday if you still feel that you want to be that. So let me start to share my screen. Let's see, there we have it. So a few points now for the next step in the DIQ. First of all, as I said, thank you for the interest. It has been amazing. 463 actually of you filled in the survey, and I think it was only
3 or 4 of all of these that had not filled in any answers. so but most of you had filled in most of the question, answered most of the question, and 332 of you have passed the first round. And what we mean with pass the first round is that you had the username in that we could find, so we can also move you to the DIQ list. So many of these names, as I said, we had only your name. And for us to track that name in the structure is not possible. We also had some people, because you remember now that Anshuman and I said that we will do this 90-day training with the DIQ program, especially for our team. All other of our trainings, our business presentations are open for everyone. We work together. But this training we wanted to do especially for our own teams. And our own teams are huge, are big. So that includes also, of course, the home team and the run team, and the X team and World Star. So we will send out these names. So take a look in the group after. If you find your name there, then you send your username to the email address that we will post. So you also get into the DIQ list. What is very important also, after we have went through all these 460 surveys and the answers, we also see that something that the whole DIQ will be more or less dependent on is that you have your why super clear. One of the questions in the survey was connected to your why. And I understand if it's not so easy for you to write down your why in a survey. So you will get one more possibility, and we will also go through a little bit today about what is a why. How can you formulate a why? Your goals we will work a lot with, but the main goals you need to have very clear for you, because that's the part of how you can reach to director. Some of you, I think maybe a handful, 5 people, had manager as their goal, and that's okay. Most of you have director, but we also have around 4 or 5 people that have president as their goal during these 90 days. But the program, the training, the way of working will be the same. Name list is also something that will be really, really important when you are now starting full focus. And then, of course, to have time management. So you don't work and work and work and you don't feel or see that you get any results. We need to be wise with our time. So when this call is over, not only you that had filled in your name and will send your username, every one of you that have done the survey, we want you to send an email as soon as possible, not during the call, but after, with your name, your username, the rank you have today, and your mobile number. Because that's the way we can also send directly out the links for the training by email, and we can also put you in the DIQ Telegram group that we will create. So the email is diqpower alpha protonmail.com, and we will post this one also in the group. But this is the email where you send your name, your username, your rank, and your mobile phone. That was the first slide. Do you want to add anything there, Anshuman? Yeah, of course. I feel that we need to. Do you have a list of the people? We just give a show to the people. Exactly who are in, and we will. Yeah, you just share your screen
the full name of the people. So if anybody is here, they can check. So दोस्तों, हम लोग अभी आप लोगों के सामने जो यूजर नेम अलाउ हुआ है DIQ के लिए, क्वालिफाइड हुआ है, हम लोग आपके सामने स्क्रीन में दे रहे हैं। और अभी इस कॉल के बाद आपके पास आएगा फेसबुक, और इस पेज में आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और जो नेम्स है, ओनली फुल नेम्स, वो भी हम लोग लिस्ट अभी आपको टेलीग्राम और फेसबुक में दे देंगे। तो आप लोग देख के जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपका नाम, आपका प्रेजेंट रैंक, आपका फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी, वो आप हम लोगों का जो मेल है कहाँ पर भेजना है, वो भी हम आपको ये कौन सा मेल पे भेजना है पोस्ट कर देंगे। आज ही रात को जो लोगों का फुल नेम है उन लोगों का आज ही आना चाहिए। और आप एक बार देख लीजिए कि किनका ये है। कैन यू जूम दैट अ लिटिल? Yeah, it's many names. It's many names. So we will also post these right in the group. Yeah, we will post this to a group because it's 332 names. So yeah, so many names. So here is also the names that are already in. So what we can do, we will post the name, and the basic thing is that this call is very short. This call is not very long. आप लोगों के लिए I just spoke in a local language a bit because people can understand. So ये जो कॉल है, ये कॉल बहुत सिंपल है क्योंकि अभी हम लोग ये ग्रुप को फॉर्मेट कर रहे हैं और काफी सारा हम लोगों के पास सर्वे आया है। और उस सर्वे से हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया DIQ के लिए, जिनका यूजर नेम है और जो यूजर नेम ये वर्ल्डस्टार और एक्सट्रीम से है। जो लोग वर्ल्डस्टार और एक्सट्रीम से नहीं है वो इस DIQ में अलाउड नहीं है। और जो लोग, वो लिस्ट आप लोगों को थोड़ी ही देर में मीटिंग के बाद फेसबुक और टेलीग्राम्स में मिल जाएगा। और आप लोगों को सबको एक काम करना है, आप लोगों के पास कहाँ पर एक मेल भेजना है, वहाँ पर आपका नाम, आपका यूजर नेम, प्रेजेंट रैंक और आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी लिख के आपको एक मेल पे मेल भेजना है। और जिन लोगों का नाम है, खाली फुल नेम है, वो लिस्ट भी सोशल मीडिया पे आ जाएगा। आप लोगों को वो लिस्ट देख के आपका नाम उसमें अगर होगा तो वहां से आप अपना नाम और डिटेल लिख के आज ही मेल करिए। जैसे ही आप मेल करेंगे, आप लोगों के पास हम लोग मेल के द्वारा एक सर्वे भेजेंगे और ये सर्वे आपको फिल करना है। कल सर्वे को फिल करना है, कल परसों आप लोगों के पास 2 दिन है। ये सर्वे को आप लोग फिल करेंगे और आपको जो दिखाया वाई, आप अपना वाई को सोचिए कि आप इस crowd1 बिजनेस में क्यों आए, आपका वाई कितना पावर है आपका वाई में। क्योंकि वाई को लेके आई स्पोक अ लॉट अबाउट वाई। आई स्पोक लास्ट 6 months 7 months only why because I believe why is a major thing। और वो वाई को कोशिश करिए विजुलाइज करने के लिए। इफ यू हैव अ वाई, if you can visualize your why, then you will get the power. So in that survey you need to fill up, that is very simple। वो हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सिंपल कर रहे हैं और आपको मजा आएगा ये 90 डेज। मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा इनिशियल हार्ड लगेगा। जब हम लोग जिम जाते हैं या साइकिलिंग करते हैं या कोई स्विमिंग करने जाते हैं बहुत दिन बाद, तो हम लोगों को क्या होता है, पेन्स होता है, यहाँ पर पेन्स होता है। जब हम लोग काम करने जाते हैं तो इनिशियल 1-2 days we will get that pain, maybe a 1 week we will not feel good, but when you start acting on that, when we start acting on that,
we will really fall in love with these 90 days. And trust me, this will give you a full energy. So जिनका भी नाम है, जिनका भी यूजर नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लीज आप लोग मेल करिए। और मेल के बाद आप लोगों के पास हम लोगों के तरफ से एक मेल जाएगा, और वो मेल पे सर्वे है, उसको तुरंत फिलअप मत करिए, सोचिए, बिकॉज दैट इज योर वाई, दैट इज यस। I just want to, because it's good if you also take that in Hindi. For example, the username that we get up when it's not exist, some is names, so that's the reason. But some has put it in username, but probably it's maybe one letter or one number wrong. So that's why the system cannot find them. Because if the username is in there, it will say username not found. But if it says username not exist, there is something with the wrong spelling or yeah, something like this. So these names and these all these names, oh, sorry, including these, we have not found their username. So they are really, really important that they send in, as you said, an email with their name and the right username. आई गॉट अ कॉल। सो आप लोगों के पास बहुत सारे डिटेल्स आप लोगों के पास आ जाएगा। इसका भी हो सकता है कोई यूजर ने टाइप करने में कुछ गलती हुआ है, तो आप लोग प्लीज ईमेल के द्वारा कीजिए। जैसे ही हम लोग ईमेल पाएंगे, चेक एवरीथिंग बाय टुमारो, you will get an email from us, and उस ईमेल पे एक सर्वे फॉर्म होगा। और ये हम लोग जो 90 डेज करेंगे, दिस विल बी अ ग्रेट फन। और इस ईमेल पे हम लोगों के पास सर्वे होगा, एंड सर्वे में आपका डिटेल, आपका वाई इनपुट करना है, कैसे है वो सर्वे बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम लोग ये आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करना है। ये 3 दिन आपको ये काम करना है। जैसे ही आप 3 दिन, हम लोगों के पास जो भी ईमेल संडे आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम, वी नीड टू क्लोज द ईमेल बाय सैटरडे। No, Friday. Saturday we have an offline event, and after that online event we will be super busy. या सो फ्राइडे हम लोगों के पास वो मेल आना चाहिए, यू हैव 2 days। और उसके बाद वी विल डू आवर नेक्स्ट कॉल ऑन संडे। संडे हम लोग नेक्स्ट कॉल करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग कुछ बताएंगे आपको इंटरेस्टिंग, और आपको कुछ सर्वे देंगे, और वो एक्शन देंगे, और वो एक्शन हम लोग करेंगे दोस्त मिलके, सब कोई मिलके करेंगे। कोई डायरेक्टर के लिए, कोई प्रेसिडेंट के लिए, कोई सीनियर प्रेसिडेंट के लिए। सो गेट रेडी, ओवर टू लोटा अगेन। Thank you. No, this will not be a long training, and as you say, Ansuman, I know that you have really spoke a lot about the why during the last half a year, and in a really good way. So I still know that it can be tough for a challenge for many people to really know your why. So this is just a help. And remember also that your why can change during your journey. But it's important that you have a strong why now, because that will be your drive. And as I used to say, that is the reason why you will keep going with your 90-day plan and keep going with your goals, even when you feel not as you want to do it, even when you feel that everything feels not so good or it's gray outside and rainy outside, you will still do what you need to do because you have your strong why. So that's also why we want you to write this why down. A help can be to use these sentences. To, so, so that, whatever you put in there can be a strong why. For example, this is just an example. To
earn 2,000 euros a week so that my children will have a good start in life. That could be a strong why. If you use this sentence to, so that, you will have a why there. So that could be a help for you creating your why. It doesn't need to be about earning money. It may be something else. This is just an example for you to find out the why you have right now. But then, as I said, this can change during your journey. Okay, fantastic. So I just explained in a Hindi Yeah, a little bit. yeah, yeah. ओके सो दोस्तों हम लोग काफी काफी वीक्स हम लोगों ने वाई के बारे में बात किया। मैंने काफी सारा स्ट्रेस किया था वाई 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 क्यों आए हैं हम लोग इस बिजनेस में, क्या चाहते हैं। और ये 90 डेज का डायरेक्ट DIQ कॉल पे सबसे सुपर इम्पोर्टेंट है वाई, बिकॉज आप और हम क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। सो उसके लिए वाई एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसको हम लोग सामने देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ हद तक एक सपोर्ट करने के लिए कि आप कैसे वाई को बना सकते हैं, एक सुपर स्ट्रॉन्ग वाई कैसे आप बना सकते हैं। और वाई को लिखना है, दैट्स वाई हम लोग सर्वे दे रहे हैं आपको, और उस सर्वे को आप लोग वाई को लिख पाएंगे। लेकिन वो सर्वे फिलअप करने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि वाई कैसे लिखना है। जैसे कि टू डैश दिया है, सो दैट डैश मीन्स एग्जाम्पल के तरीके से बोल रहे हैं। टू अर्न मतलब मैं इतना रुपीज और यूरोस पर वीक अर्न करेंगे तो मेरा बच्चा वो लोगों को एक बहुत अच्छा लाइफ में स्टार्ट मिल सकता है। बिकॉज हम लोग जो इनकम करते हैं वो जाता है फैमिली के लिए, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है आप लोग। Over to you. Thank you. Okay, we go further. And then we come to the goals, and the same thing goes with goals as with your why. You need to write them down because that will be a strong key to your success. And 2 to 3%, not people, 2 to 3% of all people are writing their goals down. But you know, these are the 2 to 3% that have the life that most people want to have, but only 2 to 3% have, because they do have goals in life and they do write their goals down. So this is so much powerful than we can imagine. And it's so simple, but you need to do it. You need to take your paper and pen and write them down so you can read them daily, because that's the power of it. Also, we know that what we focus as growth. So sometimes we used to say that, oh, I didn't have the focus. But you always focus on something. But if you focus on the wrong things or on the not so good things, that's what you will get more of. But if you focus on solutions, on the good things, that will be what you get more of. So what you focus at will always grow, either if it's good or if it's bad. And then, of course, your goals will be connected to your why. That's why you put your why first and you connect your goals to your why. Then comes the how. Okay, fine, thank you. So I got so many messages. Uh, People start sending email. So some people send me the screenshot asking questions. So anyway, दोस्तों, why जैसे इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों के लाइफ में सेट गोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई एक्चुअली एक रीजन होता है हम लोग कि हम लोग क्यों आज इस पे आए हैं। लेकिन उस रीजन को पाने के लिए गोल होना चाहिए, और गोल सेटिंग सिस्टम एक बहुत पावरफुल टूल है
जो हम लोगों को, आप और मुझे वाई तक लेके जा सकता है। सो गो वाई एक रीजन जब हम लोग बनाते, जब हम लोग एक कारण बनाते हैं जिंदगी में, ये काम करने, कोई भी काम करते हैं तो उस काम के पीछे एक कारण होता है, और उस कारण तक पहुंचने के लिए, रीच करने के लिए गोल सेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट योर गोल। और जो लोग इस गोल को लिखते हैं, जो 2 से 3% आदमी इस गोल को लिखते हैं, वो लोगों को सक्सेस ज्यादा मिल सकता है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। और जब हम लोग कोई गोल्स को लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, वो हम लोग को पावर देता है। जैसे आपको अगर बचपन पे आप देखे होंगे, आप कोई भी चीज देख के भी लिखते, कोई भी पेपर देख के भी लिखते, तो वो आपको याद रहता है हमेशा। कभी कभी हम लोग उस पेपर को भी हम लोग पढ़ते थे, फिर याद करना पड़ता था। लेकिन अगर हम कोई कॉपी देख के कॉपी को लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन पे हैमर होता है। तो जैसे ही हम और आप अपना गोल्स को लिखेंगे, 2 से 3% आदमी में भी हम लोग पहुंच जाएंगे। और वो जो लिखे हम लोग, वो हम लोग को फोकस कर देता है। वो हमेशा हमको याद दिलाता है कि मेरा गोल ये है, और हम लोग फोकस हो जाते हैं और वो करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। गोल्स कनेक्टेड है आपका वाई। जब हम लोग वाई कारण को लेते हैं और उस कारण में अपना गोल सेटिंग करते हैं, तो कैसे पहुंचना है, वो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर एक पावर आ जाता है और हम लोग वहां पर पहुंच पाते हैं। Thank you. Okay, so when it comes to goal setting, and this we will speak more about, to make it simple for us to track ourselves, because that's also a key in goal setting, to be able to track yourself. You need to make them smart goals. And that means that the more specific goals you put, and that they are measurable, that you have a deadline, you can check yourself if you are in phase, and they should be attainable, meaning that if you put them too far away, you don't see the end of it, and it will not be urgent for you to do it. You will do it later. They need to be attainable for you, and they need to be relevant, meaning that this goal cannot be done because someone else wants you to do it. You need to have this really strong reason and why you want to have this goal. That's a relevant goal for you. And it needs to be timely, super important. Sometimes we set goals, but we don't have a timeline. In this case, we have, because we have our 90 days, and we will break this down. But smart goals is very important, and we will work more with this one. ओह सुपर सुपर। सो दोस्तों, हम लोगों ने वाई कैसे, वाई का पावर जाने, गोल सेटिंग। अभी गोल सेटिंग कैसे करना है आप और मुझे। गोल सेटिंग थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब एस, एस का मतलब है स्पेसिफिक। मतलब आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपका गोल क्या है, आपने गोल को सेट किया स्पेसिफिकली। कि बहुत आदमी को पूछेंगे मुझे मर्सिडीज लेना है, तो आदमी को वो स्पेसिफिक नहीं हुआ। मर्सिडीज का कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, क्या सीट कवर, कैसे, आपको वो स्पेसिफिक होना है। जैसे ही आप कोई घर लेंगे, आपका घर किस हिसाब से होगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, अब कोई भी गोल आपका हो, आप उस गोल को स्पेसिफिक करिए। आपको अगर डायरेक्टर बनना है, दैट इज योर, डायरेक्टर बनने के लिए आपको उसको मेजर करना पड़ेगा। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। हर गोल जब हम लोग स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो वो उस गोल को मेजरेबल भी करना है। मेजरेबल मतलब जैसे हम लोग उसको पकड़ पाए, और उस पे अटेंडेबल भी होना चाहिए। अटेंडेबल मतलब आप और हम
उसको अटेंड करें, और रिलेवेंट भी होना चाहिए, और उसके अंदर टाइम लिमिट भी होना चाहिए। जब ये सारे चीज हम every day and not complicated, simple. But if you start to go up in the morning, you don't really know what to do. You just take your phone, start to look at Facebook or whatever for names and numbers. Half of the day will go. That's not saving time. You need to save time. You need to work smart. So that's why you have this list. Six things, precise things that is part of your goal. That's your daily action. सुपर। सो दोस्तों, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, गोल, वाई, ये सब चीज क्या होता है, ये मैं कर रहा हूँ मेरे लिए, आप कर रहे हो आपके लिए। और ये करने के लिए जो चीज आप और मुझे हमेशा हिट करता रहेगा, हमेशा याद दिलाता रहेगा, उसके लिए आप और मुझे छोटा सा चीज करना है। एवरी डे खुद को अपना बॉस बनना है रात को, और खुद को एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह मुझे अपना एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। क्यों? बॉस हमेशा बॉस होता है, एम्प्लॉय हमेशा बॉस का काम करता है। तो आप अगर खुद बॉस होंगे और आप अगर खुद एम्प्लॉय होंगे खुद का, तो दोनों काम आपसे हो जाएगा। और उसके लिए आपको हर दिन 6 चीज इम्पॉर्टेंट आपको टू डू लिस्ट बनानी। रात को आप जो भी करेंगे आपको टू डू लिस्ट हो जाएगा, उसको रिव्यू करिएगा। जो भी आप सुबह जो लिस्ट बनाया, जो आज अभी रात को बैठ के मैंने लिस्ट बनाया, कल रात को मैं सुबह से वो एम्प्लॉय बन के सुबह से वो सारे काम करूँगा जो मेरे को करने के लिए मैंने लिस्ट में दिया था। वो सारे काम करेंगे और फिर रात को उसको रिव्यू लेंगे और नेक्स्ट डे का प्लान बनाएंगे। तो ये आप और मुझे करना है, इसलिए करना है कि आप और मुझे अपना वाई तक अचीव करना है। देखिए कितना सिंपल सा है। बहुत सारा इंसान इस DIQ में आया, और हर इंसान के लिए मैं एक छोटा सा चीज बोलता हूँ, हर कोई इंसान के पास वो पेशेंस नहीं होता है। ट्रेनिंग पे आया और डायरेक्टर बनने के लिए सर्वे भी कर दिया, लेकिन जैसे ही कुछ देर तक मीटिंग चलता है, सब अपना अपना घर पे वापस जाता है, क्योंकि टीवी देखने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, कुछ हो गया। दोस्तों, ये सारी चीज भूलना पड़ेगा अगर आप और हम सचमुच सक्सेस होना चाहते हैं। सो इट इज सुपर इम्पोर्टेंट कि खुद को प्लान करना पड़ेगा, क्या क्या करेंगे हम कल। तो आज मुझे पास प्लान होना चाहिए। जब मेरे पास आज प्लान होगा तो रात भर मेरा ब्रेन में वो प्लान घुस जाएगा, और वो सुबह उठने के बाद आपको फिर से याद दिलाएगा, आपका बॉडी के अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और आपको बोलेगा वो जो आपको करना है वो करिए, मत बैठिए, मत सो जाइए, आप करिए। और आप एम्प्लॉय बन के वो सारे काम करना शुरू करेंगे। फिर आप रात को जो करना था और जो किए, दोनों को आप देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या आप अपने आप के लिए काम कर रहे, या आप अपने आप को चीट कर रहे। ना आप अपना सपने को चीट कर रहे हैं, गोल्स को चीट कर रहे हैं। सो इट्स अप टू यू, बट दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। ये 90 डेज आप ये मिरेकल करके देखिए, क्योंकि जिंदगी में हम लोग जो किए उसका रिजल्ट अभी हम लोग को है। अगर हम लोग कुछ नया करेंगे सचमुच, ये किताबी है लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है, और प्रैक्टिकल हमेशा वर्क Hello, करता है। officer. Hello, officer. Thank you. And I forgot one thing. The most Hello, challenging officer. thing that I feel is most Namaskar, challenging sir. is number one in the list, because you cannot jump in Hello, the list. You start with number one and go to two and three. officer. So the most challenging thing we put on the top. So we start Hello, doing officer. that, बोलो because ना. then all the other things उनका will आवाज आ be रहा है very सर. easy to do.
एकचोटि लिभ भएर Yes. फेरि आउनुहोस् जो त। भी हम लोग करने चाहते हैं फर्स्ट वन जो पॉइंट देते हैं ना, हम लोग को प्रायोरिटी हजुरको देना है आवाज कि आइरहेछ कौन नि सा सर। काम क्या प्रायोरिटी लिस्ट है। और नंबर वन पे सबसे हाई प्रायोरिटी क्या होगा वो आपको डिसीजन करना पड़ेगा। और बहुत टफ होता है हेलो नंबर हेलो। वन काम करने के लिए, क्योंकि वहां पर ही आपका ब्रेन बोलता है हेलो मत सर, करो, ये बोल्नु है करो, वो बोल्नु। करो बोलता है। नमस्कार सर है। जब आप नंबर वन बोल्नु न, काम हजुरलाई करना शुरू सिकाउने कर भनेको देंगे के। तो ऑटोमेटिकली इतना डाइरेक्टर बन्नु इजी छ हो भने जाएगा कि रेस्ट डाइरेक्टरको ऑफ बिचमा आउनु पूरा पर्यो, 5 काम जसको आपके लिए सबैको एउटै बहुत गोलमा आसान छ। हो जाएगा। हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ भने Yes. अनम्युट And गर्नु होला। then the third thing we will speak short about today is the name list. So why हेलो 100 अभि names? सर। Some people, they say that, oh, I don't even know 10 people. They do. But what is actually happening when we hear 100 is that we think that these 100 names need to be our closest friends, and absolutely not. Also, I recommend everyone to use the old traditional way to write down your name list in a notebook with a pen. Okay, if you do it in computer or phone, but you need to be able to take notes after each name. That's important. And you will start with 100 names. Then you will always keep having this list with 100 plus names. And when you have your first name, you will measure their influence level. And what is that? That means, why are you choosing to start with them? It might be because you know that this person has some good skills that you maybe don't have, and it can also be that that person is much more organized than you are, or the opposite. But always put a reason behind the name why you choose that person, because this is something you can mention to this person, and that makes it also more personalized, and that's a part of the building the relation. When you have your list, also choose the 5 people you really want to build your business with. If you could choose whoever you could choose, why should you choose these 5? And do not think now about, oh, they don't want to do this, or don't want to do that. If you could choose, what 5 people should you choose to start your business or now create your 90 days with? And then every day you add 10 new people to the list. And I will give you a tip about how you can find and add these people. Should I continue, or do you want to translate here? This is simple, I think so. Yeah, yeah. So when it comes then to your contact list, there is many different ways how to do it. This is just one example. And why I use the frogs is because it's simple to remember frogs. So the S in frogs stands for friends. And this is just to help you to step outside your comfort zone and think a little bit outside the box. F for friends can be anyone that you call a friend. Maybe when you 10 years ago or 5 years ago, or when you was going at school or whatever. But the person you call a friend, they go down in the list under F. Everyone you can think of that you can say is a friend. The R in frog stands for relatives. And this is people connected to your family or to your family's family. It can be a cousins, or whatever. But somehow they are connected to the family. Maybe this list will not be so long, but the third list that stands for the O in front can be huge, because that is everyone that you have met before, that have been your former colleagues, in other words. It can be from your school, it can be from any sports you have done, any clubs you have went to, all different organizations that you have been part of somehow. These are the kind of people you can put in under the O.
And these are probably many if you start to think about everything you have done during your life. And then you come to the G, geography. That one maybe is not that big either, depends on where you live. But this is the people around you. It can be the people working in your closest supermarket, the one that is sitting driving the bus or whatever. People around you. That's geography. The fifth group is the social group, also a huge group, and that's the social contact. But here it is also important that if you have 1,000 friends in Facebook, that's not your contact list. For them to be counted into your contact list, you need to move them from Facebook friends into your written contact list. So here you have a lot of people that you can move from the different WhatsApp groups and so on you have into your list. And if you use only this tool, the frog tool, really going through, you will see that you will find so many names. If, and this is important, you don't choose for someone else. Because if you start to choose when you find out the name, oh no, I cannot ask him because he already has a really good word. No, I cannot ask her because she has so many kids. No, I cannot ask him because he has no money or whatever. Don't choose for someone else. You put down the names you are thinking about. If they want to stop or not, it's up to them to tell you. Because you never know the situation they have today. There was so many people having social secured work last year. They lost it like over one night with the pandemic. So you never know the situation people have in their life today. And if they say no, great. You have one more no to your no list because you need a no also. So if you use the frog or whatever tool you have, you do write down your list. You will have so many names that you will not have time to go through all the names at the same time. But if you start to choose and put the and say that no, this person will not be interested, then you will come up with very few names. So let them choose and not you. Oh, superb. I want to explain a little bit. Yeah. Okay. So Should I दोस्तों, yeah, you just put no need. I can summarize. I can speak. Yeah, good. ओके सो दोस्तों नेम लिस्ट बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है इसलिए कि नेम लिस्ट इस बिजनेस आपका जो वाई है आपका जो बिजनेस है आपका जो ड्रीम्स है उसके लिए नेम लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और नेम लिस्ट का एक सुपर फॉर्मूला लोटा जी ने आप लोगों को दिखाया फ्रॉक्स फ्रॉक्स का मतलब क्या है आप लोग किस हिसाब से नेम लिस्ट को बनाएंगे वो आपके सामने है आप कोई भी काम करेंगे तो आपका लिस्ट बढ़ना चाहिए हम लोग डेली सोशल मीडिया पे इतना आदमी से मिलते हैं बात करते हैं उनके साथ आपको रिलेशन बनाना है और इस 90 डेज में और हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे सोशल मीडिया पे भी आप लोगों को ध्यान देंगे बिकॉज आज का डेट पे बिजनेस पे सोशल